हेलो जय जगन्नाथ। तो आज आम गोटे नुआ टॉपिक पर डिस्कशन करबा दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जेमती हम समस्त जानिछे एमबीए रो गोटे मोस्ट वाइटल पार्ट हला ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर because we have after MBA you have to join an organization and you must be aware about the different types of behavior the culture used or practiced in an organization. Okay, तो ता पय तुमको कोन करिया पड़िबो ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को स्टडी करिया पड़िबो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज a term which is made by two different words, that is one is organization, another is behavior. So first of all we have to define what is a organization. Organization kono jodi ame dekhiba, it is a group of people who are collected to work for a common goal with collective efforts. Organization ame ka कहबे, it is a group of people who are collected to work for a common goal with collective effort, ताको हम organization बोली कहबा। अच्छा behavior हमें का कहबा, behavior का कहबा ना, it is a verbal or physical response shown by a person as a consequence of the impact of his or her surrounding. प्रति लोक निज सराउंडिंग ता ऊपर पकाउथिबा प्रभाव को प्रभाव कोन रेस्पॉन्स रे जो सब इफेक्ट देखाय ताको हमें बिहेवियर को नहीं आम समस्त सोसाइटी रो तो आमर सराउंडिंग आम ऊपर किछि ना किछि इफेक्ट पकाए। तो सराउंडिंग आम ऊपर जो इफेक्ट पकाए तार रिफ्लेक्शन आम केमति दो, दैट इज आवर बिहेवियर। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर माने ऑर्गेनाइजेशन आउ बिहेवियर ये दी जनकर आम मीटिंग ता देखिबा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ओबी is a field of study that examines the impact that individuals, group and structure have on behavior within the organization. तो ओबी रो इम्पैक्ट कहा पर पड़े, इंडिविजुअल ऊपर भी पड़े, जो सिंगल एम्प्लॉय ता ऊपर भी पड़े, ग्रुप ऊपर पड़े, टीम वर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ता ऊपर भी पड़े, देन एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन भीतर जेते सब स्ट्रक्चर अछि समस्त को ऊपर ओबी रो इम्पैक्ट है। इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ड्राइंग ऑन इनसाइट फ्रॉम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। तो आर अर्थ कोन, ओबीटा गोटे कॉन्सेप्ट जोटा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस रो डिराइव हेछि। फर्स्ट ऑफ ऑल एटा साइकोलॉजी रो डिराइव हेछि। साइकोलॉजी रो कोन डिराइव हेछि हमें सेटा देखिबा। देखो जदि हमें देखिबा ना तो साइकोलॉजी हमें का कहबा, इट इज ए साइंस दैट सीक टू measure, explain and sometimes change the behavior of human as well as animals. Okay, psychology होची कोन चेंजिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन और एनिमल को स्टडी करिवार साइंस। ओके, तो साइकोलॉजी जदि हमें से साइंस हला तो ता धरो हम और ओबी को कोन कोन सब डोमेन आछि। जदि हमें देखिबा साइकोलॉजी रो हमको बहुत गुडा डोमेन आछि, मेजर डोमेन सब ओबी बहुत गुडा साइकोलॉजी रो आछि, जेमति लर्निंग हला, मोटिवेशन हला, परसेप्शन, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, जॉब सैटिस्फैक्शन, वर्क स्ट्रेस ए सब आछि को साइकोलॉजी रो डिराइव हेछि ओबी को। सेमते हम जदि सोशियोलॉजी कथा देखिबा ना, सोशियोलॉजी हमें फर्स्ट काहा कहबा। देखो सोशियोलॉजी होचे साइकोलॉजी फोकस ऑन इंडिविजुअल where sociology studies people in relation to social environment and culture. जेतो बळे कि साइकोलॉजी ता काहा को स्टडी करछि इंडिविजुअल विथ इंडिविजुअल ऊपर जेतो बळे फोकस करछि साइकोलॉजी, बट सोशियोलॉजी काहा को फोकस करछि ना सोशियोलॉजी सोसाइटी रो इंडिविजुअल सह जो रिलेशन तार एनवायरमेंटल कल्चर कोन ए सब ऊपर डिपेंड करछि कि सोशियोलॉजी। देन कोन कोन सब डोमेन ओबी रो डिराइव ओबी को डिराइव हेछि सोशियोलॉजी रो जदि हम देखिबा तो सोशियोलॉजी रो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पावर एंड पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन ए सब जिंस को थ्रू डिराइव हेछि सोशियोलॉजी रो डिराइव हेछि। ओके, देन आसीबा एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा एंथ्रोपोलॉजी हमें काहो कहबा, जदि हम देखिबा ना एंथ्रोपोलॉजी काहो कहबा, इट इज ए फील्ड दैट सीक्स स्टडी various societies to learn about human being, okay, and their activities. It is a field that seeks to study about various societies to learn about human beings and their activities. तो human being आउ तार activities को study करिया पाई जो सब field अछि ना ताको हमें कोन कहले anthropology बोली कहले। ओके, देन आसीबो मैनेजमेंट टू स्टडी और अंडरस्टैंड एंड मैनेज द ह्यूमन बिहेवियर। अच्छा जदि हमें देखिबा एंथ्रोपोलॉजी रो कोन कोन सब डोमेन आछि ओबी को, तो सेवडा कोन कोन ना क्रॉस कल्चरल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जहां में कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मोस्ट जनरल टर्म यूज्ड इन एमबीए, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो ये सब जिंस को उधर आछि
एंथ्रोपोलॉजी तो जना पड़ी गला ना साइकोलॉजी रो कौन कौन डोमेन आसला सोशियोलॉजी रो कौन कौन डोमेन आसला एंथ्रोपोलॉजी रो कौन कौन डोमेन आसला एंड मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इनकम्पास वेरियस एस्पेक्ट कौन कौन सब अच्छे नेचर टिके ब्रीफली डिस्कशन कर दबा स्पीडली देखो फर्स्ट ऑफ होची नेचर ऑफ ओबी First one is the interdisciplinary nature. Interdisciplinary nature kono? OB draws on theories and concepts from multiple disciplines such as psychology, sociology, anthropology, and management. This interdisciplinary approach helps in understanding the complex and dynamic nature of human behavior in organization. ये भी हमें जान लेना psychology, sociology, anthropology ये सब मैनेजमेंट रू कौन कौन सब डिराइव होची मैनेजमेंट रू कौन जदि हमें देखिबा हमें ओबी को कोथरे अप्लाई करिया मैनेजमेंट रे तो अप्लाई करिबा तो ये सब जिंसर एप्लीकेशन अच्छी ओबी रे देन आसीबा अप्लाइड साइंस अच्छा अप्लाइड साइंस हमें क्या नबा ओबी इज नॉट जस्ट ए थियोरिटिकल फील्ड it is also an applied science the knowledge gained from OB research is intended to be used to solve practical problems within organization and improve organizational effectiveness आमे ओबी को कौन करे ओबी केवल थ्योरी नुहे तो केवल पढ़ी मन रखा एग्जाम रे मार्क सिक्योर करबा ओबी इज अ फील्ड व्हिच इज वेरी मच प्रैक्टिकल टू आवर लाइफ as MBA is a professional course you have to join an organization after completion of your MBA and there you must to practice OB ओके ओबी ही एमता जिंस जहा को तुम डायरेक्टली प्रैक्टिस करिवो कोठी ऑर्गेनाइजेशन रे सो इट इज ए अप्लाइड साइंस देन आसीबो कोन सिस्टमैटिक स्टडी अच्छा सिस्टमैटिक स्टडी कोन देखो जदि हमें देखिबा ना ओबी इन्वॉल्व्स द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ओबी रे कोन हमें करबा एबे आगु आगु जेते हमें जीवा ना सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप एंड सब ऊपर हमें स्टडी देखिबा कोन कोन सब रिसर्च अछि ताकू भी देखिबा सब गोटे गोटे करी पढिबा रिसर्चर यूज साइंटिफिक मेथड टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई पैटर्न ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्चर माने निज निजर रिसर्च प्रोसेस करंती डिफरेंट मेथड डिफरेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई करंती एवं से डाटा को इंटरप्रेट करी आम आगे रखंती देन आसबो कंटीजेंसी अप्रोच व्हाट इज कंटीजेंसी अप्रोच OB recognizes that there is no one size fit all solution. One size fit all solution रो अर्थ कोन माने गोटे एकता न जे गोटे सॉल्यूशन सब प्रॉब्लम बाय फिट बसिबो OB is not that. The effectiveness of a particular management practice or intervention may depend on specific situation or context. The contingency approach consider the impact of different variables on organizational behavior. तार अर्थ होची OB different तुमको कोन सिखाए different behavior सिखाए कौन करिया पाए डिफरेंट प्रॉब्लम को डील करिया पाए ओके बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पीपल नियर बाय यू एंड देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विथ देम ओके तुमको सब प्रॉब्लम सह डील करिवार अछि नॉट वन साइज फिट ऑल सॉल्यूशंस थ्रू ओके तुमको डिफरेंट प्रॉब्लम पाई डिफरेंट सिचुएशन अछि एवं डिफरेंट सॉल्यूशन अछि तुमको सेगुडा देखिबा पड़िबो देन आसला फोकस ऑन पीपल ओबी फोकसेस ऑन पीपल हाउ पीपल आर द कोर ऑफ ओबी बिकॉज़ विदाउट पीपल ओबी अप्लाई ही हमें कहा पर करिबा ओके इट एम्फसाइजेस अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन दिस इंक्लूड इंडिविजुअल बिहेवियर ग्रुप डायनामिक्स लीडरशिप कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन ये सब हमें आगु पड़िबा एवडा कोन मोटिवेशन कोन लीडरशिप कोन कम्युनिकेशन ये सब नॉर्मल टर्म जे हमें जानि छे तो ता विषय ही ओबी देन नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ ओबी कोन फटाफट हमें पढ़िबा दैट इज इंडिविजुअल लेवल रे स्कोप ऑफ ओबी देखो इंडिविजुअल लेवल रे इट एग्जामिन्स इंडिविजुअल एटीट्यूड पर्सनालिटी परसेप्शन लर्निंग एंड मोटिवेशन जदि हम इंडिविजुअल लेवल रे देखिबा ना ताले एटीट्यूड पर्सनालिटी परसेप्शन लर्निंग एंड मोटिवेशन ये सब ओबी इंडिविजुअल लेवल रे स्कोप प्रोवाइड करे ये सब गोटे इंडिविजुअल रे जानिया इट एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल बिहेव्स and make decision within the organizational context organizational context रे गोटे इंडिविजुअल केमती एगुडा सब मैनेज करछि केमती डिसीजन नउछि तो आमे जदी इंडिविजुअल को ही स्टडी न करबा तो तार पर्सनालिटी केमती जानिबा ता परसेप्शन कोन जानिबा ता लर्निंग ता मोटिवेशन केते लेवल रो अछि ए सब आमे जानि परिबा ओके देन एंड ऑर्गेनाइजेशन रे सब बहुत मैटर करे ओके ग्रुप लेवल आज एचआर मैनेजर यू हैव टू हैंडल एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन एंड एवरी काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू ओके देन ग्रुप लेवल बट इस ग्रुप लेवल रे देखो इंडिविजुअल लेवल रे तो हमको ये सब जिंस मिलिबो सिखिबा को अछि ओबी रे ग्रुप लेवल रे कोन अछि इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ग्रुप डायनामिक्स टीम बिल्डिंग कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड डिसीजन मेकिंग विद इन द ग्रुप्स ये सब जिंस हमें पढिबा को ओके कोन कोन ग्रुप डायनामिक्स कोन टीम बिल्डिंग कोन केमते टीम गडा जाय टीम रो कोन कोन सब कैरेक्टरिस्टिक्स अछि गुड टीम होबा पय कोन दरकार कम्युनिकेशन कोन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कोन पढिबा को डिसीजन मेकिंग कोन केमते डिसीजन मेकिंग करा जाय ग्रुप रे ओके इट कंसीडर्स हाउ इंडिविजुअल इंटरैक्ट एंड कोलैबोरेट इन ए टीम सेटिंग ओके देन आसीबो 3 नंबर रे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल रे केमती आर स्कोप कोन देखो इट एक्सप्लोर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रक्चर
चेंज एंड लीडरशिप ओके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कौन देखो प्रति ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कल्चर थाए ता स्ट्रक्चर कौन तादर कौन कौन सब चेंजेस आछी एवं ता लीडरशिप चेंज होवा सह केमते ऑर्गेनाइजेशन रो लीडरशिप ता स्टेबल होची लीडरशिप तो चेंज होची माने लीडर चेंज होचंती बट लीडरशिप ता केमते स्टेबल होची सेटा को हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल स्टडी करबा इट लुक्स एट हाउ दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ओके देन आसो इंटरपर्सनल स्किल्स एटा कोन इट एम्फासाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन नेगोशिएशन एंड लीडरशिप ओके एटा होची इंटरपर्सनल स्किल्स का कौन कौन करियो को इफेक्टिव कम्युनिकेशन पाई कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पाई नेगोशिएशन एंड लीडरशिप ओके ये सब जिनस पाई गोटे गुड लीडर होबा पाई ना ये सब जिनस निहाती दरकार इंटरपर्सनल एगुडा सब इंटरपर्सनल अर्थ कोन दीटा पर्सन भितर गोटे भलो कम्युनिकेशन होबा पाई कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होबा पाई नेगोशिएशन होबा पाई तो कोन दरकार ओबी रो बहुत यूज अछि आगु को हमें पढिबा these are the crucial for creating a positive and productive work environment okay then as organizational culture and change okay एडा कोन देखो organizational culture and change it investigates the influence of organizational culture on employee behavior and the changes associated with managing organizational change it addresses how organization can adapt to external pressure and innovate okay तार अर्थ कोन ना organizational रो culture level रे प्रति ऑर्गेनाइजेशन जेमते डिफरेंट कल्चर तो कल्चर ऊपर ओबी रो कोन इफेक्ट अछि ऑर्गेनाइजेशनल रो जेमते मु कहली तार लीडरशिप चेंज होची तो ता ऊपर ओबी रो कोन कोन इफेक्ट पडुची तो ये सब विषय में पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सहित ओबी रो बहुत गहरा रिलेशन अछि कोन कोन aligns with HR practices by examining topics such as recruitment selection training performance appraisal employee motivation ये सब ओबी रो पार्ट ये सब गोटे एचआर मैनेजर जी हबो तो ताकू ओबी रे बहुत भलो हबा निहाती दरकार कारण ओबी विषय रे जानि कि जणे एचआर फील्ड रे एक्सीलेंस करि परिबो ओके ओबी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एचआर स्ट्रेटजी okay then as ethical behavior kon it considered the ethical dimension of organizational behavior emphasizes the importance of ethical conduct in decision making and interaction with the workplace okay ये तो थिला एथिकल बिहेवियर जे हमकु लास्ट ऑफ ऑल कोन से सिखाय एथिकली बिहेवियर करबाउ सिखाय ओबी हमकु एथिक्स सिखाय in summary the nature and scope of organizational behavior encompass the systematic study of human behavior in organization okay systematic study of human behavior in an organization last gote line achi with a focus on individual group and the overall organizational context it provide valuable insights for manager and leaders to enhance organizational effectiveness and create a positive work environment but positive work environment create करिया पई मैनेजर को जो जो सब स्किल दरकार बा जो जो सब इंटरपर्सनल स्किल दरकार सेगुडा सब किए ताको सिखाए मोस्टली ओबी सिखाए तो गोटे गुड मैनेजर हो पई ओबी पढिबा नियत दरकार थैंक यू वेरी मच